So in the last lecture, out of the 4 tests, we have completed about the 2 tests. Sorry, we have completed about the 3 tests. And the 3 tests which we have completed, they were the unit test, time reversal test, and the factor reversal test. रिप्लाई करो बेटा सब लोग फटाफट. We have completed about that 3 tests. मुझे बताओ विच टेस्ट. Which test beta it is based upon the beta independent of unit student. Yes, correct beta. Unit test beta is a test. Correct beta. It is based upon the beta independent of units beta, and because of that reason beta, we can say that the unit test is a test beta, which is being satisfied beta by all those formulas of index numbers beta, which are beta independent of units, and in which beta price and quantities are quoted. In which price and quantities are quoted. है ना? चलो next, according to the time reversal test, ये देखो सामने स्क्रीन के ऊपर तुम्हारे दिख रहा होगा, है ना? फटाफट आप रिप्लाई करो. According to the time reversal test, the ratio of the current year, if it has been multiplied with the ratio of the base year, then the product of the two ratios, it will always result into a it will result into a unity. That means P01 into P10. Answer it will be always equal to 1. And sometimes instead of P, we can also make the use of I. So we can say that I01 into I10, that will be equal to 1. So next. With respect to a factor reversal test, तो भाई मुझे बता with respect to factor reversal test, and factor reversal test मुझे बताओ. The factor reversal test it was being given by the Professor Fisher, and according to the Professor Fisher, A, the change in the price of a commodity
If it has been multiplied with the change in the quantity of a commodity, then it results into the total change in the value of a commodity. That means P01 multiplied by Q01. It will be equal to V01. Here. Alright. And I also proved that the P01 into Q01, it also results into the summation of P1 Q1 upon the summation of P0 Q0. ऐसे करके हम लोग ने 3 टेस्ट जो है वो कंप्लीट कर दिए थे, राइट? एंड नाउ we continue with the last test called the circular test. Okay, guys. And point wise, you have to understand all these things. लिखते रहना है बड़ा फटाफट बड़ा. You can make a note of that. The circular test. Circular test. It is an extension of our. It is an extension of a time reversal test. It is an extension of a time reversal test. But मुझे ये बताओ कि in the time reversal test, how many time periods have been taken into consideration? The two time periods would have been taken into considerations. Which were the two time periods? One was the 0 and another one was the 1, right? But here we are going to consider more than two time periods. More than two time periods. And this test which we are going to study, it is based upon the shifting of the base continuously. बेस जो है वो हमें चेंज करते रहना है. I will explain with respect to with respect to थ्री टाइम पीरियड्स. अब कौन से थ्री टाइम पीरियड्स यहाँ पे लिए गए हैं? The three time periods which are being taken into consideration, they are 0, 1, and 2. 0, 1, and 2. Again, and accordingly, mathematical conditions which are being given over here is P01 into P12 into P20 always always it will result into our 1.
always it will result into a 1 bro. P01 into P12 into P20 that will always result into a 1 bro. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ पढ़ाई सबको? के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट समझ तैयारी में आ का रहा है मैं क्या साथी। बोल रहा हूँ सबको? अब यहाँ पे तुम लोग ध्यान से चेक कर सकते हो कि मैंने कंटिन्यूसली है ना बड़ा, कंटिन्यूसली बेस जो है बड़ा वो मैंने चेंज किया है। बेस जो है बड़ा वो कंटिन्यूसली बड़ा मैंने चेंज किया है। पहले का जो करंट था ना बड़ा, पहले का करंट ध्यान से देख बड़ा, उसको मैंने बनाया बड़ा दूसरे का बेस। पहले का करंट बड़ा वो बना दूसरे का बेस बड़ा। अच्छा, दूसरे का जो बड़ा करंट था ना, दूसरे का करंट उसको बड़ा मैंने बना दिया तीसरे का बेस। उसको बड़ा मैंने बना दिया बड़ा तीसरे का बेस बड़ा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और बड़ा तीसरे का जो करंट था ना बड़ा, तीसरे का करंट वो बड़ा था पहले का बेस बड़ा। ध्यान से चेक करो बड़ा, ये मैंने जो टाइम पीरियड जो बड़ा लिए वो मैंने एग्जैक्टली बड़ा सर्कुलर फॉर्म में लिए। वो मैंने एग्जैक्टली बड़ा सर्कुलर फॉर्म में लिए, और उसी की वजह से बड़ा मुझे ये कंडीशन मिला। P01 into P12 into P20, the answer is equal to 1. Left hand side, left hand side ये P01 into बड़ा P12 into बड़ा P20, which is equal to P01. Answer is summation of P1 upon summation of P0. P12 means summation of P2 upon बड़ा summation of P1, and P20 means summation of P0 upon बड़ा summation of P2. दिख रहा है बड़ा सब लोग को? अच्छा स्टूडेंट्स, between the ratios there is a relation of multiplication madam. Summation of P1, summation of P1, summation of P2, summation of P2, summation of P0, summation of P0. All these things will get cancelled and answer will be equal to 1. But मैं सब लोग को, और मैं जो बोल रहा हूँ वो सब लोग ध्यान से सुनो। मैं बोल रहा हूँ कि टाइम पीरियड्स जो है वो हमेशा सिर्फ 0, 1
N2 नंबर्स ही क्यों हो सकते हैं? वो कभी कभी बड़ा वेरिएबल्स भी तो हो सकते हैं कि नहीं? अगर बड़ा टाइम पीरियड अगर बड़ा x y बड़ा एंड अगर z हुए x y एंड z x y एंड z, चलो मुझे बताओ विद रिस्पेक्ट टू बड़ा x y एंड z तुम लोग मुझे मैथमेटिकल कंडीशन फॉर्म करके बता सकते हो? तुम लोग में से बड़ा कोई मुझे मैथमेटिकल कंडीशन फॉर्म करके बता सकता है? अगर टाइम पीरियड्स बड़ा एक्स वाई एंड जेड हो तो यस और नो बोलो खाली। विद रिस्पेक्ट टू द टाइम पीरियड्स it will be p x y into बड़ा p y z to p z x, it will be result into one। बोलो यही बोलना चाहते हो तुम लोग? यस और नो? एंड समटाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं, इंस्टेड ऑफ बड़ा p हम लोग वहां पे यूज करें आई I01 into I12 into I20, the answer will be equal to 1. Answer it will be equal to 1. And अब चलो बड़ा चेक करते हैं तो बड़ा सर्कुलर टेस्ट को बड़ा कौन कौन सेटिस्फाई करता है? सर्कुलर टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट। अब ये सर्कुलर टेस्ट इट इज बीन सेटिस्फाइड बाय simple geometric mean of the price relative student, weighted aggregative weights with the fixed weights, weighted aggregative with the fixed weights। ये ऐसे फॉर्मूलाज है जो ये सर्कुलर टेस्ट को बड़ा सेटिस्फाई कर पाएंगे। और उसके बाद बड़ा तुम लोग ध्यान से चेक कर सकते हो कैसे कौन से फॉर्मूलाज है जो ये टेस्ट को बड़ा सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे तुम लोग सबका नाम ले सकते हो, सबका, लास्ट पियर्स, पास्चेस, Corbish, Bowley's, and even the bit Fishers, even the bit Fishers could not able to satisfy the circular test। तो यहाँ पे बड़ा फिशर्स ने चार में से बड़ा कितने टेस्ट को सेटिस्फाई किया? आउट ऑफ फोर बड़ा फिशर्स हैव सेटिस्फाइड बड़ा हाउ मेनी टेस्ट? फटाफट बड़ा रिप्लाई करो, फटाफट रिप्लाई करो। 3 टेस्ट बड़ा। यूनिट टेस्ट, number 2 is a time reversal test, number 3 is a factor reversal test। Fishers failed to satisfy the
ratios failed to satisfy the circular test. Ratios failed to satisfy the circular test. ये टेबल का बड़ा तुम लोग फोटो क्लिक कर सकते हो टेबल का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा फोटो क्लिक कर सकते हो तुम लोग। क्लिक कर लो और उसे लर्न कर लेना। And now what let me proceed. With the sums